मुंबई एडवोकेट एसोसिएशन स्मॉल क्लास कोर्ट के अधिवक्ताओं ने 65B सर्टिफिकेट को तैयार करने और उसे सबूत के रूप में मानने से संबंधित एक संगोष्ठी किया। मुंबई के एडवोकेट एसोसिएशन स्मॉल क्लास कोर्ट की दूसरी मंजिल बार रूम एक संगोष्ठी 65B सर्टिफिकेट से संबंधित आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता रवि प्रकाश जाधव सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा की है। अधिवक्ता रवि प्रकाश जाधव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में कई अवधारणा है, जिनमें से 65B प्रमाण पत्र कैसे तैयार किया जाता है और उसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है और कब प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ क्या व्हाट्सएप चैट, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट के लिए प्रिंट आउट के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। रवि जाधव ने अपने वक्तव्य में नागरिक और वैवाहिक मामले में भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत की स्वीकार्यता पर काफी विस्तार में चर्चा की गई और उसके साथ साथ अन्य कई तरह के प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चाओं का सेमिनार किया गया। Now, machine translation. Now, any art, any video, any image created on computer or offline or on paper, non-fungible tokens. So recently, Ranger hashtag 879 got bidding of $5.68 million. See the image. What is exactly? It was online auction, online bidding. Now, CryptoPunk. It's a very famous CryptoPunk 1, 2, 3. Now, I think many more are coming. $5.33 million. Then 5 pins and all. NFT. Just for your knowledge, keep in mind NFT is something. What is meant by metaverse? Metaverse is like Geo is working on it. Very few months or like 2-3 years it will be in use, practical use. Already it's a pilot project what they are doing. They are already developing some hardware which will be useful for various purposes like online payment, real estate. Suppose I am very busy person and I don't want to go outside and this channel partner will call me. At Vigo is so and so to reach the flat is we are offering at 1.5. So please visit Vigo. Four-wheeler will give this and that as a basic. So by using this technology, I can hear the gadget and I can see standing at my office or wherever I am. I can see what exactly is the room, what exactly is the balcony, how it is constructed. So then travel and tourism, blockchain, virtual, the social media platform, healthcare. Metaverse has different kind of applications in medical also. Now, blockchain. What is meant by blockchain? Smart contracts. Have you heard this word? E-filing has already started. Facility center is also installed. So blockchain is going to play a crucial role in our judicial development. In our e-court community is working on this, how to utilize this blockchain technology. What is meant by a digital database or a ledger that is distributed among the nodes of the peer-to-peer network. So financial and non-financial uses are there. Non-financial uses, authentication. At the time of filing before the High Court, everyone has to submit their file. Now, one advocate or one party sued him, he said without getting license. Okay. So this robot computer, I am taking you back definition of computer. That means robot computer or not? Next, operating system again. Now, I said while mentioning in a certificate you have to mention operating system. बॉस हमें तो पता है खाली विंडोज होता है, ये क्या है पता नहीं चल रहा है पीसी लगी है. So you have to check Sun OS is there, HP, IBM, VMware, Apple and Windows we all are known about that. Red Hat,
then FreeBSD, all are types of OS operating system. There are many more. Hackers use a different operating system. Ubuntu is one of the that, but Kali and all the anonymous operating systems are missing here. Now next, hardware companies are there. These are the list of hardware company. Now mobile operating system again. Android, iOS, BlackBerry, Symbian, Web, Harmony, Bada, Windows, Palm. And then next, these are some social media site detail, portals, then payment gateways, then Ola, Uber and all. Now search engine is important. Google, everybody says Google is coming right. Have you heard any search engine? Yahoo. Yahoo is there but not majorly used by people. Yahoo, MSN, Live, Bing, Search Engine. Next, data is the new gold. Now again, I am taking you back to the definition. Very important. Why data is new gold, new oil? Because it will be used. If you search on Google, like and just wait for half an hour, on your Facebook will be available. How it is happening? What the hell they are doing? They are tracking me. Where is my privacy? Europe got their own policy, own act. Where is India's policy? Where is servers of these Facebook and all? Nothing is secure at all. Everything is open. Alex, I'll come on that. See, type of data gathered at these. When you click anything on the internet, browser. Whatever you browse, it will be recorded. It will be there. It will be electronic record with the Google, with the Facebook. Suppose I posted one video which is against someone and immediately I deleted it. Then the person fights case with court and Facebook will be like a party. The court will ask, give me the detail, browsing detail, give me the detail of his account, operating system, device specific information, email addresses, phone number, profile information, third party connect data, search queries, IP, face scan, ISP, location, time and date, method of tracking data. That's it. What will happen? Definitely you are going to do that. If they are derived, the major evidence is derived. Position in relation of this section, information shall be taken to be supplied to a computer if it is supplied. Our Advocate Bar Association has organized today one function on electronic media, that is 65B. The amendment came in the CPC, and for that how electronic media we have to use it in evidence. Earlier it was not there, so now it is very essential to know about section 65B. We invited, our association invited Supreme Court Advocate Sri Ravi Prakash Jadhav, who delivered a non-stop lecture for more than 2 hours on this subject. And to hear him, I think our whole bar, which contains about more than 160 advocate members who were present, and pin drop silence, his speech was delivered. I really thankful to Supreme Court Advocate Sri Ravi Prakash Jadhav for his ready to deliver his lecture and enlightened we all people, including senior advocate as well as junior advocate also, which will really helpful to them in their day-to-day practice in this court as well as in any court in the whole India. Why? Because today first time we came to know about how this electronic media being really used in a proper manner and how it is being misused by the all offenses who are committed during all of this. This is not only electronic media or via media, it also he includes about the useful of our mobile, how we have to use, how we cannot pass on our number, pin code number to the other people also. That also he has taken us to the all matters. I really once again thankful to Advocate Ravi Prakash Jadhav, and to hear him also, there are many senior advocates
who are present in our bar, and really I also thankful to all senior advocates, junior advocates, our committee members, our honorary secretary Sachin Gele, our vice president Mr. G.K. Shah, and other people also. I am really thankful to you and all the members who remain present in this matter. Thank you very much. स्मॉल कॉलेज को एडवोकेट एसोसिएशन सेक्शन 65B इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट रवि यादव जी का जो आज लेक्चर हुआ है, ये सेक्शन 65B इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और ये जो आज रखी गई है, जो लेक्चर सीरीज जो रखी गई है, उसमें हमारे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स और एक्स प्रेसिडेंट और जो हमारी प्रेजेंट कमेटी है उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑल कमेटी मेंबर्स, और ये हमारे जो एक्स मेंबर्स भी हैं, हमारे जो प्रेजेंट मेंबर्स भी हैं, ये सब उनकी मदद और उनकी हेल्प से ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। और शायद मेरे प्रैक्टिस से, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ टिल डेट, मैंने इतना क्राउड अपने इस बार रूम में कभी नहीं देखा, और इसलिए ये हमारा लेक्चर सीरीज जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। हॅलो, मी ॲडव्होकेट संतोष हरिदास स्मॉल कॉलेज कोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करतो आणि आमच्या ज्या बार आमचं जे आहे, जे बार असोसिएशननी जो आजचा प्रोग्राम जो त्यांनी इतका छान प्रकारे सिनियर ॲडव्होकेट श्री रवी जाधव सरांनी जे आम्हाला लेक्चर दिलं, सेक्शन 65B रीड विथ सेक्शन 3 ऑफ द एव्हिडन्स ॲक्ट, या बाबतीत त्यांनी जे आम्हाला माहिती दिली ही उल्लेखनीय माहिती होती। आम्हाला त्या बाबतीत बऱ्याचशा गोष्टी माहिती नव्हत्या, आणि आता आम्हाला एवढं छान प्रकारे कळालं आहे की त्याचा ॲफिड्यूट 63B मध्ये ॲफिड्यूटमध्ये काय काय लिहायला पाहिजे, काय काय तरतुदी आहेत, त्याचे काय काय जजमेंट्स आहेत हायकोर्टाचे, सुप्रीम कोर्टाचे, त्या बाबतीत त्यांनी जी माहिती दिली, त्यामुळे आमचं आता जे 63 बद्दलची जे आमच्याबद्दल मध्ये जे आम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती नव्हती ती पूर्ण माहिती मिळाल्यामुळे आम्ही योग्य प्रकारे आता त्या प्रकारे एव्हिडन्स लीड करू शकू। व मी सर्व आमच्या कमिटी मेंबरचे खूप आभार मानतो। हा त्यांनी जो कार्यक्रम केला आहे हा उल्लेखनीय कार्यक्रम केला आहे, आणि मी सर्वांचे धन्यवाद मानतो, आणि श्री रवी सरांना खूप खूप धन्यवाद देतो कि त्यांनी आमच्या ज्ञानात भर पाडल्याबद्दल धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों के बीच में रवि प्रकाश यादव जी ने जो 65B के ऊपर जो सेमिनार अरेंज करके हम लोगों के बीच में जो बताया, लोगों को जानकारी दिया, वो बहुत ही अच्छी जानकारी दी, अनएक्सपेक्टेड। हम लोगों को मालूम नहीं था कि इतने एडवोकेट्स भारी तादाद में हम लोगों के बीच में भाग लेंगे, और लोगों के अंदर बहुत खुशी हुई। लोग बोल रहे हैं कि वंस मोर, एक बार और फिर हम लोगों के बीच में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं रवि प्रकाश यादव जी से विनती करूंगा कि आप हम लोगों के बीच में वापस आइए, वापस 60B के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप चर्चा करें और लोगों के बीच में अपना नॉलेज डिवाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी।